Hello, I'm just waiting for some other folks to join. Hello. Hello, hi Sanjana. Hey Kunal, are you going to help me build this today? I will try my best. Actually, I don't have any experience in game development. Uh, There Neither to did game. I when I made first one, so we'll give it a shot. We'll see Sure. क्या बना पाते हैं आज. Let me see if I can share my screen. उसके पहले कोड सैंडबॉक्स खोल रहा हूँ. Okay, log in. Try to keep it an hour or so. देखते हैं कितना बना पाते हैं उसमें. सनी के गुप्ता से लॉग्ड इन हूँ मैं. Port repository created a box. Create a sandbox. Can do that. React नहीं vanilla JS में करें. करते हैं vanilla static HTML template. ये बनाया था मैंने शायद. Public pro okay create sandbox. ये विकास हेलो। क्या हाल है. सही है, आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर. सही। आप बताइए क्या हाल है आपका? ठीक है सर. थॉट स्पेसेस कर करके कुछ उतना नहीं हो पा रहा था. आई वाज लाइक लेट कुछ मी नया नो पीपल फॉर्मेट हाउ. ये अच्छा है।
हाँ, लेट्स सी कि इसमें क्या बना पाते हैं। जस्ट आई थिंक आई विल हैव सो टू ये गेम अपग्रेड। डेवलपमेंट जो, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ हाँ, कि क्या टूल यूज़ करूँ। आई थिंक कोड सैंडबॉक्स बेस्ट लगता है मुझे फिलहाल। कौन सा कोड सैंडबॉक्स बेस्ट रहता है? हेलो। नहीं नहीं, कौन सा कोड सैंडबॉक्स? नहीं, कोड सैंडबॉक्स तो एक ही है। अच्छा, बट हाँ, जो आप हम लोग आज को मतलब गेम डेवलपमेंट आप कोड करोगे लाइव, तो मतलब क्या वेब बेस्ड होगा या ऐसे कुछ और? हाँ सर, वेब बेस्ड ही होगा, यही आता है अपने को। फिर ठीक है, फिर मैं समझ भी पाऊंगा। अच्छा, दूसरी वही चीज़ हो मुझे, तो वो भी समझ में आ जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ओके, है, नाउ है आई कुणाल। नीड टू। Yeah, hi Vikas. मैं वैसे बाहर था, आपका मैसेज देखा। लग तो जाना पड़ेगा घर। अच्छा। 8:30 बजे वाला मैसेज। नाइट गेट रिफ्रेश। ओके, कूल। इसमें कैसे स्पैम? इसमें मतलब कोई स्पैम करके ज्वाइन कर रहा है? अरे कोई रैंडम नेम से ज्वाइन कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ले लूँगा ऐसे, किसी को लग रहा है तो। तुम अच्छा। कम से कम सामने से बात करोगे तो सोचेंगे, करेंगे कुछ। डिस्कॉर्ड पे स्पैम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, रीस्ट्रीम पे ही। तुम लोग ने जैसे ज्वाइन किया है अपने अपने नाम से, हम्म। somebody tried to join, अजीब सा नाम रख के। वो किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज है, विकास तुम्हारे यहाँ से हाँ बैकग्राउंड हाँ, नॉइज है। सॉरी सॉरी। ये रिस्ट्रीम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है क्या? गूगल कर लो यार ये सब तो। हम्म। कौन है? एक मिनट, लिंक। अंकुश। अंकुश आ रहा है, बस 2 मिनट। ओके, मेरे एग्जिस्टिंग सेव्ड पेमेंट मेथड्स तो नहीं चल रहे हैं। लेट मी ट्राई आउट समथिंग न्यू। भगवान जाने क्या हो रहा है। नॉट ओपनिंग अप।
change the card itself. My expense. Okay. कौन सा वाला यूज करेंगे? SBI. यस, ठीक है. 0 3 5 4. ओके, मैं कोड सैंडबॉक्स खरीद नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीजन. ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ वेरी सिंपल थिंग. कैसे हो गया? प्रो हो गया? कितनी बार परचेज हो गया? फेसिंग एन इशू बोल रहा था 10 बार ये तो. भगवान. स्टोरेज सब्सक्रिप्शन. ओके, बाद में देखूंगा. बन गया है somehow. Create a dev box. JavaScript. Unlisted. Open in code sandbox web editor. ओके. क्या बना रहे हैं हम? जेएस SRC इंडेक्स डॉट MJS क्या है? तुम में से किसी को पता है MJS क्या है? नहीं. मॉड्यूल JS. तुमने देखा ही नहीं. कोई बात नहीं. लेट्स गेट बैक टू द मेन थिंग. अंकुश अब तक नहीं आया है यहाँ पे. कोई नहीं. लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन. डॉक का विंडो शेयर होगा. इनफैक्ट नहीं. आई विल चेंज व्हाट आई एम शेयरिंग. आई शेयर अ टैब. शेयर. कूल. एंड स्क्रीन दिख रहा है ना? परफेक्ट. तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर वी ट्राइंग टू मेक, राइट. तो मैं जिस गेम की बात कर रहा था ओरिजिनली, उस गेम में एसेंशियली मैंने एकदम सिंपल सा बनाया था कि आप जब ऐप लॉन्च करेंगे, गेम लॉन्च करेंगे, इट विल आस्क यू फॉर योर नेम. You enter your name, it will say hello, whatever. In my case it will say hello Sunny. Are you ready? You say yes. Immediately it will show you a number. तो आपको एक नंबर दिखाएगा. Let's assume 6. तो आपको याद करना है 6. फिर उसके बाद वो आपको एक prompt देगा कि okay, now enter whatever number you saw. Very easy. You remember it was 6. You enter that. You go ahead, right? As soon as you do that, you have cleared the first stage. सेकेंड, वो आपको 2 नंबर दिखाएगा इस बार. पहले 5 दिखा दिया, फिर 5 हाइड हो गया, फिर 3 दिखाया, फिर 3 हाइड हो गया. अब एक प्रॉम्प्ट आया, बोला जो नंबर देखे वो एंटर करो. तो यू रिमेंबर मैंने 5 देखा था, फिर 3 देखा था. आप 5 और 3 एंटर करोगे एंड यू क्लियर दिस स्टेज. तो यू रियलाइज दैट विथ टाइम
uh, these numbers will keep on increasing, and you can only go up till a certain stage, right? मतलब you cannot remember infinite number of numbers. तो ये सिंपल सा गेम बनाया था मैंने बैक इन 2005. दैट वाज ड्यूरिंग माय C++ years in school. तो मैंने सोचा एक बार जावास्क्रिप्ट में ट्राई करते हैं. I wanted to give this streaming thing a shot, so I thought this is probably something. समझ में आया गेम क्या करने वाला है? Yes. Yes. Okay. I haven't thought about the design. I haven't thought about anything, so I don't know how it is going to turn out. But let's give it a shot. Um, so entirely run via JS. ठीक है. This is what they've done. सबसे पहले एक बनाया जाए डिव के अंदर से. अगर हम काम कर ही रहे हैं तो ये तो मुझे ये नहीं पसंद है, ये ज़बरदस्ती करता है. ओके. दैट इज फाइन. उस टाइम पे मैंने डाविंची कोड दिया था, बट आज की तारीख में वो नाम नहीं दे सकता. तब बच्चा था, आज नहीं हूँ, तो कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं. Think of a good name. Anybody? Let me also keep an eye on our Discord channel so that I can listen to people if they're typing something. Okay. Discord में भी आप chat use कर सकते हैं. Most of the chats are getting relayed to me on whatever platform you are. I might be able to just read it. who all are watching, एक बार हाय हेलो कोई कुछ भेजेगा क्या? जस्ट सो आई नो. 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक इंसान है, कोई नहीं है. It takes about 20 seconds for data to flow through. From the time I record till the time it reaches live streams, it could be up to 30 seconds of delay. Welcome to. ठीक है, डाविंची कोड नहीं है, डाविंची कोड करते हैं. इस पे तो नहीं लिया होगा hopefully. Okay, why is this not running? Okay, ठीक है. I would say let's make it ठीक है. Below this I would say let's say अच्छा, ये तो पूरा चीज़ अब रहेगा बेसिस जावास्क्रिप्ट. लिंक फॉर ज्वाइनिंग विख्यात, आई कैन DM you. Give me a second. किसको भेजा था अभी मैंने. प्लीज़ यूज़ रियल नेम्स. अजीब अजीब से नाम में नहीं यूज़ लेने वाला हूँ. विख्यात, आई हैव जस्ट सेंट यू अ DM. विनायक को भी मैंने लिंक भेज दिया है. एंड थिंक दैट्स इट. Cool. Back to channel. All right. Okay. I would say let's start by having a state. So देखो game है, right? What does it mean?
the way most games are broken down into code is you have an entry point, you have a loop that keeps on running, and then you have an exit point. ठीक है? Which is आप गेम चालू करने से पहले आप जस्ट स्टार्ट पे आए हैं, यू कैन प्रेस द स्टार्ट बटन. द मोमेंट यू प्रेस द स्टार्ट बटन, there is an endless loop, there is a forever loop that keeps on running. उसके अंदर it keeps on checking कि भाई where is this person, what is this person doing, has this person won the game, is this person still playing, a lot of things keep getting checked. And then at any point जहाँ पे भी उसको break condition मिल जाएगा कि भाई ठीक है अब यहाँ तो game खत्म हो चुका है, it will then uh, just tell you that the game has ended. The screen can be very well done so as to tell you कि भाई you can now start playing again, or what have other players scored etc. तो आपको लीडर बोर्ड वगैरह अगर मुझे दिखाना है तो वैसे दिखा सकते हैं. टू बिगिन विथ सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी पे ध्यान दे रहा हूँ आज मैं, राइट. थोड़ा सा टाइम है तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी what I was trying to refer to. And yes, we can, over time we can make it look amazing. With time we will also add some theming to it. We will let our users uh, uh, select color schemes, right? Look at leaderboard. So if I was to just list down the various things, get the user's name, uh, let the user start the game from the menu. Okay, let me put it in other terms. Show menu items मैं जो अभी envision कर रहा हूँ, be start new game, see leaderboard, update name और exit. एग्जिट तो क्या ही, मतलब दिस इज नॉट, मतलब आप तो अपना खुद ही बंद कर सकते हो जब चाहो ब्राउज़र विंडो या रिफ्रेश वट, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस इन दिस वर्जन. अगर आप इसको पैकेज करेंगे, इफ यू एंड आई एंड अप पैकेजिंग दिस ऐप, राइट, in Android, iOS, whatever, maybe we port this over. At that point, you will need an exit option. Like you want the user to be able to click on exit to kill it. Again, in the modern world, even that people just like swipe up and app kill हो जाती है. We'll see. I don't remember exactly आजकल ये exit options दे रहे हैं लोग या नहीं. So I'll skip it for now. Of this, I am trying to focus on uh, start new game today, right? How it should behave, what it should do, etc. Uh, so let's say game बनाते हैं. कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं. ओके, गेम को हम देंगे एक एलिमेंट कंटेनर. तो आप इसको एक डॉम एलिमेंट पास करेंगे. न्यू गेम जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हम उसको एक डॉम पास करेंगे, और उस डॉम के अंदर जाके वो गेम खुद को रेंडर भी कर लेगा और उसके अंदर जाके बैठ जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट से कि ठीक है,
ये अलग से ऐप रखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। In fact, if anything, I'll say okay, and I essentially want to eventually just say new game का इंस्टेंस बना के कंटेनर में मैं बोलूँगा my game container. The moment I do this, it will initialize game. Let my game instance equals to this, and I will simply say my game instance dot start. जब भी मैं ये बोलूँगा तो वो गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज लोड होगा तो हम लोड कर लेंगे। विनायक, फॉलोइंग थ्रू, समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन्स? यस, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? A lot of this हाँ, is दिखाई दे रहा है। tribal knowledge that I have. I haven't created a structure today to be able to deliver what I am talking about. But जैसे जैसे मैं चीज़ें करता जाऊंगा मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक्सप्लेन करूं, एंड इट्स ओके फॉर यू ऑल टू जस्ट से कि अरे ये तो समझ ही नहीं आया, ये क्या कर दिया, ये क्यों किया, एग्जाम्पल। शुभम, आई विल सेंड द लिंक टू यू एज वेल, जस्ट सेंड इट टू यू। ओके, डिस्कॉर्ड पे रिप्लाई कर रहा था। हाँ, तो कहाँ थे अपन? हाँ, अब आपको मैंने कंटेनर दिया तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि अपने इंस्टेंस के ऊपर कंटेनर रख लूँ ताकि मेरे को बाद में जब भी कुछ करना हो उसी के अंदर मैं करता रहूँगा सब कुछ। एकदम नाइव तरीके से करेंगे आज हम, टू मेक इट क्विक। दिस डॉट कंटेनर इक्वल्स टू कंटेनर, ये चलता है क्या? चलेगा, चल जाएगा, नाइस। अब ये बोलेगा स्टार्ट फंक्शन नहीं है, एरर नहीं दे रहा है, कंसोल कहाँ है? ये कूल। ये तो अलग ही चल रहा है। हाँ, अब बताओ। स्टार्ट इज नॉट अ फंक्शन नहीं बोला, क्यों? इसने एरर देना चाहिए था ना यहाँ पे, मतलब मैंने अभी तक तो बनाया ही नहीं डॉट स्टार्ट को फंक्शन। देना चाहिए था ना, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। आइडियाज, विकास, कुणाल, क्या मिस कर रहे होंगे? आया, बहुत टाइम लिया उसने, एसेंशियली उसने लगता है डेव बॉक्स पे कंपाइल करके रन करने में टाइम लिया। एनीवेज, एज लॉन्ग एज start is a function। विनायक इज बैक, विनायक ड्रॉप हो गया था। कूल। स्टार्ट क्या करेगा? एनीबडी नोस व्हाट प्रॉम्प्ट इज? हाँ, एकदम ब्राउजर का, एकदम लोकल। हाँ, इक्वल्स टू, इसको इवेंचुअली हम थोड़ा बेटर करेंगे, बट हाँ, ऐसा ही होता था। प्रॉम्प्ट यूज़ किए हुए मेरे को 10 साल हो गए होंगे। हाँ, पापी है, देखते हैं। ओके, ठीक है। एवरीबडी हियर नोज व्हाट अ प्रॉम्प्ट इज? नो। यस। नहीं, सिंपल सी चीज़ है। प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे अलर्ट होता है ना,
उसकी तरह ही होता है इंटर इनबिल्ट। ये आपका मोस्ट ब्राउजर्स हैव प्रॉम्प्ट सेटअप। आप प्रॉम्प्ट में कुछ भी मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज दिखाता है और इट लेट्स द यूजर एंटर अ वैल्यू एज वेल। ठीक है, इट इज कंप्लीटली सिंक्रोनस। तो जावास्क्रिप्ट जब भी ये लाइन एनकाउंटर करेगा तो वो एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा ब्राउजर का, एकदम नेटिव वाला। ठीक है, शुभम इज ऑल्सो हियर, ओके हाँ। वो एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा एंड उसके अंदर ये मैसेज दिखाएगा, इट विल अलाउ यू टू एंटर अ नेम। फॉर एग्जाम्पल आई रिफ्रेश इट, सी इट इज सेइंग एंटर योर नेम। ठीक है, आई एंटर सनी, और जब तक मैं ओके ना दबाऊं तब तक एग्जीक्यूशन ही आगे नहीं बढ़ा है। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आइडियली यू वांट, यू आर नॉट सीइंग द प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट। नहीं दिखा। मैंने स्क्रीन शेयर ऐसा किया हुआ है कि आपको नहीं दिखा। अच्छा, 1 मिनट, ओके ओके ओके, ठीक। कोई बात नहीं, गुड, थैंक्स फॉर दैट कॉल आउट। सो नाउ आई विल डू दिस। अब मेरा ओवरऑल विंडो दिख रहा है ना? तो now I will again run this. So what you're now seeing is a prompt. ठीक है, whatever message you had written comes up here and नहीं, सनी वो जो प्रॉम्प्ट आई का एम जो नॉट एबल टू सी। प्रॉम्प्ट दिख नहीं रहा है इस पे। फिर से नहीं दिख रहा है। ओह ओके, अंडरस्टूड। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन इस बार। पहले मैंने टैब शेयर किया था, फिर मैंने विंडो शेयर किया, अब मैं इंटायर स्क्रीन शेयर करूँगा। लेट्स सी। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आया ही नहीं है अभी तक वैसे तो। हाँ, आया। cool, okay. तो basically this shows up whenever you write prompt. You can try it out in your console as well. आप मैन्युअली अगर कंसोल में कभी लिखेंगे prompt, ये वाले कंसोल में पता नहीं, ये कोड सैंडबॉक्स का अपना है, but still it should show up, right? Whatever, whenever you write prompt, you, and whatever you write here, right, test value, you will notice that is exactly what is returned from this. Do you see that prompt is being called as a function? This is the way to look at it. Prompt is being called as a function, correct? Function call करने का ये तरीका होता है ना? हाँ हाँ, And any function returns a value, correct? सही बात है। तो prompt एक function की तरह कॉल होता है, एक पॉपअप दिखाता है और रुक जाता है, ब्राउजर को अटका देता है, कुछ नहीं करने देता उसके बाद। रिमेंबर, जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। वो सिंगल थ्रेड इस वक्त पे रुक गया है, कुछ नहीं कर रहा है अब जिंदगी में। वो बैठा वेट कर रहा है कि सनी कुछ तो बताएगा मुझे लाइफ में, राइट? सनी और whoever the user is. And the moment I enter any value and press OK, this is the value that gets returned of this function call. ठीक है, समझ गए? Hopefully everybody followed this part. And that is why डज इट टेक्स एम्प्टी? क्या? अगर उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं डालें तो कुछ एरर दिखाता है या नहीं वो नहीं, ले आप अगर लेता उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं डालेंगे तो रिमेंबर जावास्क्रिप्ट ओवरऑल इज हैज ऑलवेज बीन अ फॉरगिविंग लैंग्वेज। तो देखा ही होगा। अगर मैं यहाँ ऊपर दबाऊंगा और इसका रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग है तो क्या लगता है क्या आना चाहिए? अगर आपको, तो आपको बनानी होती है लैंग्वेज, आप क्या डालते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? नल या फिर हाँ या फिर नल। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड एम्प्टी स्ट्रिंग एज वेल, बट आ रहा है नल स्ट्रिंग ही आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। जब कैंसिल कर दिया था तो नल आया, कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो नल आ रहा है, और जब कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज बीइंग प्रिंटेड एज एम्प्टी स्ट्रिंग बिकॉज इफ यू नोटिस, जब मैं कुछ वैल्यू डाल रहा था वो बिना कोड्स के प्रिंट हो रहा था, राइट?
and that is why you are not able to see it, but it is empty string. You can check it by doing empty string triple equals to prompt और ओके दबाते हैं और उसने बोल दिया ट्रू. यू रियलाइज हाउ वी कैन embed this anywhere. There is a warning function also. क्या? Similarly, there is a warning function also that हाँ वो तो अलग चीज़ है ना, उसका कोई वैल्यू से लेना देना you नहीं. can use for a stop function, व्हाट स्टॉप फंक्शन? stopping the game has ended. हाँ हाँ अलर्ट है वो तो. Yeah, right. वॉर्न क्या करता है? Warning, I think. वॉर्न नहीं, अलर्ट ही की बात कर रहा हूँ मैं तो. हाँ, हाँ वो तो ठीक है. मेरे साथ अनूप बैठा हुआ है टीम शिक्षा से ही, तो हम दोनों अगल बगल में बैठे हैं. ये देखो आ गया कोई प्रोमोशनल, उसके अभी ये शो करने वाला हूँ. तुम लोग को दिख रहा है क्या चैट वाला? हाँ हाँ दिख रहा है. कौन सा चैट दिख रहा है तुमको? ये जो अभी प्रमोशन वाला है वो ना, राइट साइड में दिख आया? रहा है. अच्छा. नहीं लास्ट टाइम ये लोग बोले थे उनको नहीं दिख रहा है जब मैं लास्ट टाइम टेस्टिंग कर रहा था. इंटरेस्टिंग. ये ट्विच के थ्रू आया है क्या? उसमें ट्विच का इसे वो कोई ट्विच सिंबल पे है. वॉच करते हुए हाँ, उसने ये देखा है. ये देखो मैं शो पे क्लिक कर रहा हूँ सो दैट पीपल कैन सी व्हाट दिस इज. अरे यार लोगों से ये खरीदना होता तो क्या कर रहे होते. कोई बात नहीं, इट्स ओके. बैक टू व्हाट वी वर डूइंग. ऑलराइट, सो वी allow you to enter your, we store it somewhere. ठीक है. I can simply स्टार्ट के बाद आपसे आपका नाम लिया एंड मैं ये बोल सकता हूँ डिस्प्ले मेन्यू. फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले मेन्यू कॉल कर देंगे. कंटेनर हमें पता ही है तो हम बोलेंगे डिस्प्ले मेन्यू एक बार कॉल हुआ है तो दिस डॉट कंटेनर. अच्छा कंटेनर के अंदर मुझे क्या HTML डालना है इस वक्त पे वो मैं पहले, तो जनरली द वे आई डू इट इज I create the HTML, then finally I just copy it and put it in my JS. Or so let's say new क्या क्या आइटम्स हमने रखे थे, ये था ना. I can make an ordered list. उसमें लिस्ट आइटम ही होता है ना. ओके ये बिल्ड करके कितनी स्पीड से वहाँ भेज रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे हटाया नहीं था. ओके ठीक है. this is what I want to show to my users, and before that welcome और जो भी नाम होगा कैसे करते हैं डॉलर ब्रैकेट नेम या डॉलर विल गेट देयर. डिड वी स्क्रॉल somebody else joined? नहीं, they are left. ठीक है. यहाँ पे जो भी हमें नाम पता है आपका हम वो लिखेंगे यहाँ पे. Okay, this is what we want to do, and whenever the user clicks on any of these you will do certain things basis that. Let's say इसको data
डेटा पैरामीटर्स किसी को याद है? यस, नो, मे बी ट्राई करें। याद तो नहीं है, कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। डेटा इक्वल्स टू ए या फिर 1। मैंने तो 2-3 साल से नहीं लिखा है, तुम लोग को नहीं याद है? तुम लोग क्या कर रहे हो रोज बैठ के? आ जाएगा अभी। आई नो व्हाट आई वांट टू डू हियर। कूल। ये मैंने इसलिए डाला है कि जिस पे भी क्लिक होगा आई वांट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड किस पे क्लिक हुआ है एंड कीप इट कम्प्लीटली स्टेटलेस। अदरवाइज मैं रिएक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट इन अ मैनर सो दैट इट इज सेल्फ sufficient on purpose to keep it simple and to help people realize how this can be done. Okay, display menu क्या करता है? Display menu simply says show this inside game. ठीक है। this dot container. अरे सही था, नहीं गलत था। ये नेम में ऐसा वो क्यों लगा हुआ? ओ भाई साहब, बहुत दिमाग वाली चीज़ हुई है। Does this work? Would this work? I don't know. नहीं चला, क्या फट गया? अभी तक वहाँ तक कोड ही नहीं गया है। समझ में आई बात? नहीं, गलत है। After this line, it will go to this the display menu. हाँ, आ गए। Okay. No, okay, I'm not missing anything. ठीक है, अब मैं एक बस की कोड पहुंचा कि नहीं पहुंचा के लिए इनर HTML गलत लिखा होगा मैंने, कुछ तो ऐसी बकवास की होगी मैंने, आई एम श्योर। कोई बात नहीं। देख रहे हो, प्रिंटेड मेन्यू ही नहीं आया। इनर HTML में HTML कैप्स होता है, HTML। पूरा हाँ। आप अगर कुछ नहीं एंटर करेंगे तो वो नल दिखा रहा था, उसको भी अभी हैंडल करते हैं अपन। एंटर योर नेम में मैं डालूंगा सनी। आ गया, वेलकम सनी, स्टार्ट न्यू गेम। फिर वो कंसोल लॉक आ जाता कम से कम, तो मेरे को पता चल जाता कोड आ गया। ये कुछ तो प्रॉब्लम है, कंसोल लॉक क्यों नहीं हुआ? समथिंग इज रॉन्ग विथ दिस सेटअप। समझे? वरना मैं पकड़ लेता कि कहीं और का प्रॉब्लम है। दैट इज अ प्रॉब्लम। एनीवेज, दिस डॉट नेम के अंदर जो भी वैल्यू मिल रहा है, राइट, जो भी प्रॉम्प्ट से आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रूथ ही होता है, फॉल्स ही होता है? फॉल्स। याद है सबको? तो अब मैंने जो लिखा है इसका मतलब समझ में आ रहा है? If it is empty, then put cast. राइट, अब मैंने एम्प्टी कर दिया, मैंने सिर्फ एंटर दबाया था। फिर से रिफ्रेश करते हैं, मैं बाहर क्लिक करूंगा या फिर कैंसिल पे क्लिक करूंगा, गेस्ट ले लिया उसने। ठीक है, पहले जब तक मैंने ये चेंज नहीं डाला हुआ था, राइट, तब तक क्या हो रहा था? तब तक गलती से अगर बाहर क्लिक कर दिया तो बोलता है वेलकम नल। भाई इतना भी नहीं है ना, हमको ये है कि ठीक है, नाम बता रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो तो कुछ तो अच्छा नाम दिखा दें आपके लिए, करेक्ट? एंड सो टू डू दैट, प्रॉम्प्ट से जो भी रिटर्न में आया या तो वो, और अगर वो फॉल्सी वैल्यू है, कोई भी फॉल्सी वैल्यू है, राइट, तो हम चले जाएंगे द डिफॉल्ट नेम, जिसका नाम हमने अभी के लिए गेस्ट सोच रखा है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। बट अगर मैंने अपना नाम डाला तो
वो मेरा नाम ले लेगा, ठीक है, ऑल गुड। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू से कि जो ये ओ एल है, राइट, दिस अनऑर्डर्ड, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट दैट वी हैव, इनमें से किसी पे भी क्लिक हो तो कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, राइट। यार इतने टाइम से मैंने ये काम नहीं किया है। आई कैन सिंपली से इफ आई क्लिक दिस और दिस और दिस, तो मैं इस कंटेनर के ऊपर ही लिस्नर लगा देता हूँ। नेम्ड लिस्नर लगाना और हटाना jQuery में तो इजी था, इसमें कैसे करना है? एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बाय नेम्ड लिस्नर्स? ताकि मैं उसको ऑन या ऑफ कर सकूं, जो jQuery आउट ऑफ द बॉक्स देता था। रिएक्ट में भी इट जस्ट टेक्स केयर, क्योंकि री रेंडर वगैरह में इट टेक्स केयर ऑफ नॉट अटैचिंग इट 2 टाइम्स। इनफैक्ट नहीं, हम ही करते हैं वो मैन्युअली, आई रिमेंबर। एनीबडी? मुझे दिस डॉट कंटेनर पे ऑन क्लिक हैंडलर डालना है, बट पहले मुझे ये इंश्योर करना है कि पुराना लगा हुआ ऑन क्लिक हैंडलर हट जाए। नहीं, कोई कुछ बोल रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ, बहुत ही एको वाला आ रहा है विनायक, बोलो। मेरे को नहीं आ रहा किसी का, मेरा नहीं आ रही है, सॉरी विनायक, आपका माइक एंड इंटरनेट ऑल ऑफ दैट टुगेदर इज जस्ट नॉट वर्किंग। अच्छा, ऑन और ऑफ इसमें वेनिला में भी आ चुका है क्या? नहीं नहीं, इसने बनाया है। हाँ विनायक, कब बोल। अगर ऑन क्लिक हटाने तो मतलब दिस डॉट कंटेनर डॉट अनडिफाइन कर सकते हैं या फिर नन? ऐसे ऑन क्लिक चलता है क्या? ऑन क्लिक तो मैं 10 लगा सकता हूँ ना, मुझे उस पर से हटाना है, करेक्ट, परफेक्ट। यप। इसने बनाया है वैसे ऑफ, ये अलग तरीके से बनाया है इसने। तो ये तो खैर नेम्ड वाला है, उससे लगाएगा हटाएगा। इवेंट कॉल बैक कैप्चर, आई थिंक जब हम ऐड इवेंट लिस्नर करते हैं तो रिस्पॉन्स में आता होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, राइट। अभी चेक कर लेते हैं। मिल गया इसको अपना HTML एलिमेंट, बहुत बढ़िया बात है। डॉट ऑन क्लिक डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन करना पड़ेगा ना। नेम देने की जरूरत नहीं है। एंड आई विल से लेट्स से हाँ, कुछ देने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो बस अलर्ट करना है। आना चाहिए था ना, नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऑन क्लिक फंक्शन है, हाँ, अब तो हो ही गया। कोई नहीं है मुझे गाइड करने वाला।
विनायक कोशिश कर रहा है लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी गेम मिला उस आइटम पे। ये ऐसा तो नहीं है ना, वो आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? हाँ ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है। वही बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि वो ऑन क्लिक में सब कुछ स्मॉल में तो नहीं है जैसे आप कैमल में लिख रहे हो? ओह अच्छा हाँ वो भी हो सकता है बट ठीक है ये रहा ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक। ठीक है हम वो कर पा रहे हैं और रिमूव नहीं कर पाओगे इसे क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसका रेफरेंस चेंज हो गया। जो फंक्शन है, रेफरेंस चेंज कर। ओके हाँ तो आप बोल रहे हो कि एक फंक्शन इधर डाल दूँ। हाँ, कॉमन फंक्शन बना के हाँ सेम रेफरेंस को इफ ऐड रिमूव करोगे तो हो जाएगा। गॉट इट समझ गया। तो एज लॉन्ग एज आई हैव द सेम रेफरेंस टू दैट फंक्शन I can add and remove it. Hence, I can simply say uh, handle click, right? Handle menu click नाम का फंक्शन जो मेन्यू पे क्लिक हैंडल करने वाला है इवेंचुअली बिफोर लॉन्च। तो दिस डॉट कंटेनर पे मैं ये बोल रहे थे आप। ये मैं कर सकता था। नो वीडियो फीड ऑब्वियसली नो वीडियो फीड। विनायक फिर ड्रॉप हो गया बेचारा। विनायक इकलौता है जो लगा पड़ा है। बाकी लोग सीख रहे हो या शर्म आ रही है बात करने में? कहाँ गए हम? ये मेरे को देखना ही है यार ये सब क्यों वेस्ट हो रहा है टाइम। हाँ ओके नाउ ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक दिस डॉट हैंडल मेन्यू क्लिक बाइंड दिस। कोई बता सकता है मैंने ये क्यों किया साथ साथ बाइंड दिस? To have the current object in the handle menu click. टू हैव द करेक्ट ऑब्जेक्ट। Current object. Current game object. बट इसमें भी तो रहेगा ही रहना चाहिए ना। दिस डॉट हैंडल मेन्यू क्लिक हाउ डज दिस वर्क व्हेनेवर आई कॉल दिस फंक्शन? No, no. Inside the handle click function. हाँ हाँ If you इनसाइड द access, हैंडल क्लिक फंक्शन ओनली आई एम सेइंग। if you do this way, I think if you print this, it will be. इट विल बी Uh, okay, I'm confused here. I'm not sure. ऐसा गुड। मैंने आप लोग को सॉल्व पहले दे दिया था इस वजह से यू नो व्हाई पीपल आर डूइंग इट क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन दैट पीपल कीप आस्किंग। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ओ अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बाइंड लगा दो। आई रोट इट इन द फर्स्ट प्लेस बट प्लीज अंडरस्टैंड that when you add event listener this is expecting a function. You're not calling this function right away, right? You are just passing the reference of a function. This reference could just have been abc, right? It does not care about the fact that you know of how you are passing on the reference, and that is why when you pass it this way somebody else receives it, right? Add event listener receives कि अरे इसको एक string मतलब एक इस event के ऊपर ये function call करना है। Add event listener is treating this as a single variable. If it is receiving it as x, now I'm going to confuse a lot of people, but hopefully those who are a bit advanced in JS and have never understood this well enough, add event listener अगर हमने बनाया होता तो it would be event name
function to call, correct? And for however we would have decided, we would say if event, whenever that event happens, we want to execute the function. How would we execute the function? Function to call को call कर देते, right? Whenever this is being called, यहाँ पे कोई this है क्या? नहीं है, right? And that is why when this function is called without anything before it, you all understand this part. Most people who are learning JavaScript understand this part well enough. कि अरे अगर आप बिना कोई चीज के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा या अनडिफाइंड आ जाएगा, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर. ठीक है? यस, नो, मे बी, शायद समझ में आया, नहीं समझ में आया. यस यस गॉट इट. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. Yes. हैप्पी टू स्पेंड सम टाइम. आई मीन शाश्वत जो क्लास लेता है उसमें कभी उठा के एक बार बात करते हैं इस पे इन डेप्थ, राइट? Again, I'm just doing this impromptu. A lot of stuff that I'm going to be googling along the way, but hopefully we all learn something out of this experience today. ठीक है? This dot handle menu click dot bind, so that जब भी handle menu click कॉल होगा उसके अंदर जब मैं this एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो उसको करेक्ट this मिल जाएगा. ओके, लेट्स से, ठीक है. अच्छा, इसको दो तीन चीजें मिलती है ना, टारगेट, करेंट टारगेट एंड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. इवेंट मिलता है इसको, इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है ना इवेंट हैंडलर को, करेक्ट? उस इवेंट हैंडलर के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. रिमेंबर, let's look at target, current target, default target in event object. Okay, target is the element that triggered the event, मतलब जिस पे यूजर ने क्लिक किया था. Current target is the element that the event listener is attached to. What does that mean? इसके अंदर जब हम आएंगे तो हम पाएंगे कि console.log चलता नहीं है यहाँ पे एक तो for some reason. ठीक है, अलर्ट ही कर देते हैं. इवेंट डॉट टारगेट जिस पे यूजर ने क्लिक किया, यार डेटा वाला ना, वनीला जेएस डेटा एट्रीब्यूट्स, दिस इज समथिंग वी ऑल शुड यूज. हाँ, ये देख रहे हो, तो मैंने डेटा वैल्यू लिख दिया है, हाउ टू एक्सेस इट. गेट एट्रीब्यूट वाला तो दैट्स नॉट डेटा सेट. ओके, गॉट इट. ये रहा, समझ गए? बस सिंपल सा है. डेटा सेट डॉट वेल था कि स्क्वायर ब्रैकेट वेल था. खैर, दोनों चल जाएगा एज लॉन्ग एज इट इज देयर. नाउ इवेंट तो है, टारगेट भी होगा ही. Will this work or not? I don't know. We will see. हर बार वन आ रहा है, क्यों? Maybe it is getting the first ever element that ever. वो तो मैं समझ रहा हूँ कि वही हो रहा होगा. क्यों? एलिमेंट तो हमने क्लिक किया स्पेसिफिकली, ये वाला li. But the thing you are getting in the game is the main container, that is the whole game. Out of that you are getting the target. आई एम क्लिकिंग, जो लोएस्ट एलिमेंट है जिस पे क्लिक किया होता है, जो लोएस्ट एलिमेंट है जिस पे क्लिक किया होता है, राइट?
वो तो आई विल टेल यू मैं क्या बोल रहा हूँ. इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा. अरे हाँ, यही तो प्रॉब्लम था, मल्टीपल टाइम अटैच हो जाती हैं चीज़ें. इस बार आया प्रिंटेड मेनू अचानक से, अब तक नहीं आ रहा था. स्टार्ट न्यू गेम, सी लीडर बोर्ड, अपडेट नेम. now pick. क्या चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया सर, वो फर्स्ट वाला नहीं पिक कर रहा था. It was not refreshed. मैं कोड सैंडबॉक्स को मार दूंगा, पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसी पे चला रहे हैं आज हम तो. So this way you now know which one the user has clicked on. Okay, the problem is going to be, as I keep saving now, if I make some change to this and save, right, it will start printing it 2 times at some point whenever this runs. देखो अब 2 बार प्रिंट हुआ है. ठीक है, मैं एक बार और रन करता हूँ अब इसको, for whatever reason, right? Why is that happening? क्योंकि मैं ये add event listener करता चला जा रहा हूँ उसके ऊपर. ठीक है, and that is the problem. अगर ये पेज रिफ्रेश हो गया तो अलग बात है. मैं चाहता हूँ भाई मैं तेरे को एक बार अटैच करता हूँ तो एक बार अटैच हो. ठीक है, अगर पहले से अटैच्ड है तो पुराना वाला भूल जा, कोई बात नहीं. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, राइट? टू डू दैट, यार इस पे बाइंड दिस अगर करूँगा मैं विनायक, तो फिर से उसका रेफरेंस तो चला जाएगा. ठीक है, अभी के लिए तो दिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आई कैन फॉर नाउ स्किप इट एंड वील सी. आई थिंक एड इवेंट लिस्नर में हम कुछ वैल्यूज़ भी भेज सकते हैं, जो उसको इवेंट के साथ साथ मिल जाएंगी. आई रिमेंबर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अगेन हैवंट डन इट इन अ लॉन्ग टाइम, बट आई एम श्योर इट इज़ देयर. रिएक्ट कितनी आसान बना देता है हमारी ज़िंदगी, सोचा है कभी? दिस right before this I will say remove event listener, right? क्लिक के ऊपर से सेम. इस बार इस बार हटा होगा ना, हटना चाहिए ना. हाँ मतलब इन थ्योरी तो हटना चाहिए. इंस्टेंस सेम है, हाँ करेक्ट. करेक्ट. as long as it's the same function it should यस. behave correctly. Refresh. Single, single, single. Make some changes to the code just to show that 2 बार भी रन होगा तो ओके. अब हमको ये 2 बार नहीं आएगा, राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड ये लाइन नंबर 31 और 32 क्यों किया गया? गंदा कोड है, आई नो. यस. Okay, so we have shown the menu, we have taken your name, we have a very good handling mechanism, right? एक काम लीडर बोर्ड तो नहीं कर रहे, अपडेट नेम कर देते हैं. ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि अच्छा अपडेट नेम पे क्लिक किया है अगर यूज़र ने तो कैसे ट्रीट करना है. लेट मी ऑल्सो क्विकली से एड इवेंट लिस्टनर में एड इवेंट लिस्टनर के जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, बताए ऑप्शंस. नाइस. Options is an object that specifies characteristics about the event listener. Oh, ये तो वैसे वाला options है, sorry. Capture ये सब नीचे आ रहा है यार. Okay.
will this item get its own this or not? Let's get shop. We can use arrow function in as this handle menu click. कहाँ पे सर? So in add event listener पे अगर हम arrow function अगर यूज करेंगे तो वो दिस अपना रिमेम्बर रखेगा, वो रिमूव करने में मुश्किल हो बहुत अच्छी बात बताई आपने, एकदम अच्छी बात बताई जाएगा, वो आपने। एंड रिमूव नहीं हो पाएगा। हाँ, समझ गया ना? हाँ चलो, आई एम ग्लैड। मैं सोचा मुझे अभी समझाना पड़ेगा, बट ठीक है, परफेक्ट। तो यार हाँ, वही वो रिमूव नहीं होगा, इज द प्रॉब्लम देयर। इस वजह से तो हमने ये किया है, राइट? आई कैन डू समथिंग एल्स। प्रॉपर्टी भी बनती है ना? हैंडल मेन्यू क्लिक जो है, इसको मैं मैन्युअली फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? इक्वल्स टू, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते Sunny, क्या? just one suggestion. Okay, हाँ बताओ। let's say when we add an event listener, we attach another data value, and we check if the data value is set. Then we don't attach the event listener, or else we attach it. Something like that. कुछ नहीं समझ में आया, सुन के अच्छा लगा। So when you are adding an event listener, we will also attach a हाँ data val, let's say data listener, right, to the DOM element. Now we will check if the listener, like that data hyphen listener is set, then we won't attach a हाँ listener next time. But if it is not set, we'll attach the listener and set the. सर, मैं बार बार अटैच करना चाह रहा हूँ, सॉरी। देर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन आई विल चेंज इट। अ गेम इज गोइंग टू remove stuff and add stuff multiple times. Mhm. I'll tell you how and why. Right? A menu once drawn does not mean it cannot be drawn again. It needs to be drawn again. Games don't end up behaving like React. Right? Games, I know, मैं काफ़ी अलग सी बात करने जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, games generally re-render a large portion of their screens. Right? एंड दैट इज हाउ, मतलब जस्ट टू अवॉइड एनी ग्लिच एक्सेट्रा, जब इतने स्मार्ट सिस्टम्स नहीं थे। आज हम स्मार्ट सिस्टम से नहीं बना रहे। अगर हम रिएक्ट में किए होते, मैं तो बस एक अपने स्टेट में नाम अपडेट कर देता एंड इट वुड जस्ट स्टार्ट अपडेट, यू नो, रिफ्लेक्टिंग हियर, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग, राइट? एक और सनी सजेशन आई थिंक, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बाइंड दिस के साथ पहले ही कर दें, मतलब इन कंस्ट्रक्टर अगर हम उसको बाइंड कर दें, ये भी तो चल जाना चाहिए, नहीं? ये हाँ हाँ, मतलब ये भी यही वही चीज़ है, मतलब काइंड ऑफ कि हम जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, ये वही चीज़ है। ये तुमको बचपन के रिएक्ट की याद आ गई क्या? एकदम बढ़िया, एकदम मतलब मक्खन मार के बताया वो बात। बहुत लोग करते थे ये काम रिएक्ट में, याद है? किसी ने किया था ये बचपन में? मतलब हाँ, जब दिस क्लास डॉट हैंडल मेन्यू क्लिक इक्वल्स टू दिस डॉट हैंडल मेन्यू क्लिक डॉट बाइंड दिस। ये किया है कभी? ना ऐसे ऐसे वाले काम Yes, करते थे that पहले thing. हाँ क्लास रिएक्ट में में बहुत सारे लोग। हाँ हाँ, एंड पीपल वेर लाइक, भाई ये कोड रट लिया था सबने। क्यों करते हैं किसी को नहीं पता, सब कर रहे हैं, राइट? But this will also work. This will also work. Let's stick to one. This I know works. जो अभी मैंने ये अभी जो select किया हुआ है, तो I will remove that and I want to see if this also works. Again, haven't written class based uh, definitions for a really long time and I want to see how this is going to behave. ठीक है? क्लियर कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। सनी, कूल। मैं अब इसको ये बोलूँगा कि अगर ये जो है ना, ये इनर HTML से मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, पहले तो डेटा सेट पे आ जाते हैं, एक मिनट। डॉट डेटा सेट, पहली बात तो ये क्यों नहीं चल रहा है? अरे अबे तो चल, तो पिछली बार नहीं चल रहा था, देखे नहीं थे? सेम कोड लिखा था मैंने रिफ्रेश नहीं किया था ना यार। रिफ्रेश, इसमें वो हो गया है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।
वी नो दिस वर्क्स। तो एज लॉन्ग एज मुझे दिख रहा है 1 2 3 वैल्यू, राइट, मुझे पता है 1 का मतलब स्टार्ट न्यू गेम है, 2 का मतलब सी लीडर बोर्ड है और 3 का मतलब अपडेट नेम है, राइट। मुझे बस यहाँ पे एक काम अब करना बाकी रह गया है, स्विच ऐसे करते हैं क्या, या स्विच के आगे स्पेस होगा, केस 1 समथिंग, केस 2 समथिंग, केस 3 समथिंग। किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसको अंदर जाना है बाहर आना है। एनीवेज, ओके, टू पे क्या था, थर्ड पे नाम ही अपडेट करा लेते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू prompt updated, ठीक है। केस 3 के बाद मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, कोई बताएगा क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे टू मेक दिस वर्क। डिफॉल्ट आई थिंक होता है। क्या किया है हमने, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, अरे हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, सॉरी। हाँ, अभी भी कुछ करना चाहिए मुझे, अभी भी मुझे कुछ करना डिस चाहिए। डिस्प्ले में यस, ऑसम। कोई बताएगा क्यों करना चाहिए मुझे ये, स्क्रीन अपडेट करने के लिए नया नेम सेट। अब आप समझ रहे हो रिएक्ट क्यों अच्छा लगता है इतना। हम पूरा का पूरा फिर से अपडेट कर रहे हैं। हाँ, मैं अलग अलग करके बना सकता हूँ एंड मैं वहाँ जाके अपडेट कर सकता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, a beginner developer would end up doing this every day, and that will make their life a living nightmare. समझ रहे हो, जावास्क्रिप्ट डेवलपर अगर होते तुम आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले भी रिएक्ट आ चुका था, बट हाँ एक टाइम पे जब आप रिएक्ट जैसी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे थे, राइट, तो आपको ये सारा कोड अपने हाथ से लिखना पड़ता। ओ माय गॉड, मुझे याद रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है और सिर्फ वही जाके अपडेट करना है, तब जाके आप एक हाई परफॉर्मेंस ऐप बनाएंगे, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू लॉन्ग बैक व्हेन we used to write vanilla JS based websites. We had to do our own virtual DOMs, right? Anyways, let's see. नाम डाला सनी ओरिजिनली, अपडेट नेम पे क्लिक किया और नाम डाला विनायक। चलेगा क्या, चल गया, ओ माय गॉड इट वर्क्स। फिर सी लीडर बोर्ड पे क्लिक किया तो विल शो लीडर बोर्ड नाउ, स्टार्ट न्यू गेम पे क्लिक किया तो विल स्टार्ट गेम नाउ, अपडेट नेम पे क्लिक किया तो फिर से पूछा उसने विकास डू यू, अब कुछ सेंस ऑफ आ रहा है कि हम कुछ बना रहे हैं। ओ माय गॉड, अब हम ऐप बना रहे हैं, इट इज डूइंग समथिंग, इट इज नाउ able to do things, right? A lot of people, by the way, the moment they realize this, there's like, अबे इसने इतनी से में ये सब कर लिया यार, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ अब। This is the mindset that you will need, right? Have an entry point,
have something that takes care of itself for a really long time and then have an exit point. We don't have an exit point because हमारे यहाँ गेम में मतलब जो भी ये स्क्रीन है, ये छोटा सा रद्दी सा ऐप जो हमने अभी बनाया है, राइट, आपको बंद करना है, आप इसका टैब बंद कर सकते हैं. Let me go back to Discord and see if anybody is saying, sharing anything. Can't see text in Twitter stream properly. Is there any way you can change that? Tanishk, we are live on multiple platforms. Please prefer LinkedIn or YouTube or something. I think it is clear in some places. Twitter generally is very patchy when it comes to going live. I think Twitter was built for people to go live and not for code. But thanks for that call out. I will probably add a QR code. And you can see if my Twitch stream is better. Let me know. ट्विच स्ट्रीम का QR मैंने डाल दिया है. If it is readable or not. Okay, back to this. और क्या क्या कर दें आज? 10 बज गया यार. खाना खाने जाने का मन हो रहा है. लीडर बोर्ड तो थोड़ा सा ना स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे कभी उस पर, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज कुछ यूज़ करके, राइट. गेम स्टार्ट करने के लिए डिस्प्ले मेन्यू से रन गेम लूप चलाना है मुझे. ये फंक्शंस को भी थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं. बट इफ यू नोटिस आई स्टार्टेड डूइंग इट एज अ क्लास रादर देन, एक ही चीज़ डालने वाला हूँ इस पूरी वेबसाइट में, तब भी मैं एक क्लास बनाया हूँ ताकि चीज़ें आपस में एक दूसरे का इंस्टेंस वगैरह ध्यान रख पाए. एंड यू नो द कनेक्शन, हु कॉल्स व्हाट व्हेन. People during interviews especially, people start creating functions कि अरे यार सनी आपने इंटरव्यू में एक ही तो चीज़ पूछा है, 4 फंक्शन लगेंगे, बना देता हूँ, क्या क्लास में करूँगा. तो प्लीज इंश्योर कि यू थिंक नेटिवली इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, कहीं तो कुछ मैसेज आया है, मुझे नहीं पता चला कहाँ आया है. अंकुश इज हियर. हेलो अंकुश. हेलो व्हाट इज अप. कुछ नहीं, हमने अब तक क्या बना लिया है, आप जब ऐप लॉन्च करते हैं तो हम आपको प्रॉम्प्ट दिखाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर व्हाट दैट मीन्स. और आप अपना नाम एंटर करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं. The only option that we've implemented up until now is update name. And it works on my machine. Nice. So far. To do that, we did a bunch of things. बीच में हम बहुत सारी चीज़ें गूगल करके याद किए हैं. There are some interesting glitches in this code sandbox का setup. करेक्ट कोड लिख दो और सेव कर दो और क्लिक कर रहे हो, देख रहे हो चल नहीं रहा है, कोड डिबग किए जा रहे हैं. फिर सोचा अच्छा यहाँ पर रिफ्रेश क्लिक करते हैं अगली बार और चल जा रहा है. तो एनीवे ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. बट हाँ, आई नीड अ बेटर सेटअप ऑफ what do I use to do this coding. But I just realized I should have at least zoomed in this much. Cool. Currently HTML is a very simple, straightforward and H1. I have a section container, I have named it game. I have created this class and all anybody needs to do to create a game is create a new game instance, pass it the reference of wherever you want it to render, and then call start on that. Start मैंने बनाया था, हाँ बनाया था. So you could create an instance and not start it. अभी के लिए it seems like I should just have kept it this way, but हाँ. Took very long to access your Twitch stream, took way too long to scan it. Sorry I say.
I don't know what to do about it. We'll improve this with time. But yeah. But is the Twitch stream clearer? I know Twitter is going to be super blurry and all. But let me know if Twitch is clear. Oh, Twitter stream. Oh, sorry. हाँ मैंने भी तो that's my fault. That's my fault. कि you're telling me that the stream is not clear, and to send you to another stream, I'm saying scan this QR. The QR is also poor guy. Sorry, man. Oh my God. Okay. This is corner cases unthought of. So I am not implementing leaderboard right now, Ankush. The entire game is just going to be the moment you start a game, you see a number, you have to enter that number. You keep and then you win that stage. You go to the next stage, you see two numbers, you enter those two numbers, and then you keep doing this till the time you cannot remember all the numbers that you saw. Okay? You see numbers Okay, gajab. one at a time. So I'll show you 5, and then I'll show you 7, and then I'll show you 3. And then you need to enter it in the same order, 5, 7, 3. So it's just a simple Very memory cool. game. And Anoop is sitting with me here, and Anoop was saying this is a game that they probably tried to test the intelligence of monkeys with. I don't know. I thought of this game back in 2005. Wait, Random. why was Anup playing that game? Yeah. No, डिस्कवरी पे दिखा रहा है. Oh, he saw it on Discovery. Interestingly. But yeah, okay. Yeah, that's where we are. I am now feeling a mind block. I simply want to start the game. 1 minute, somebody else also joined. Vikyat Patnagar is back. All right. What are you up to, by the way, Ankush? I was out for a walk. Then there were a bunch of evaluations that we were doing today, being a weekend. In Now, RDS. yeah, end year evals. Okay. Sounds Wrap that. serious. Yeah, it was fun. Okay. Start game. Let's see. What would I do? I would replace all of this, show a number, then share a prompt. Okay, I'm going to keep it really simple for now, just to kind of get this done for once. I will say every time you start a game, this dot score equals to 0. I reset your score. What else should I do? I have to generate a random number. Can somebody teach me how to generate random numbers in JavaScript? Rand? इसका कुछ तो था यार. I कुछ तो forgot. था? Math.random. Math.random. Thank you. Cool. And I need to give it. I think range. नहीं भाई. पता है तो बोलो, नहीं पता है तो Multiply with 10. क्या करो. Uh, Yeah. it will always It give a only number between 0 generates and 1. between 0 and 1. 0 and 1, and then I have to multiply with 10. And floor. Sorry, कहाँ गया? Star 10 and floor or seal. I will do floor because I want from 0 to 9. Correct? No? Yes? Yeah, it is correct. Okay. It actually generates a pseudo random number. Oh, yeah, thank you. Yes, it does. But this is a game that I don't intend to give prizes for
So if somebody can predict those random values, more than happy to let them win this every time. Even then, it becomes a game of memory because you're randomly getting this. Uh, ये ना एक फंक्शन है. I can just keep it as my generator. With time, I say, I don't know how to pronounce your name. I say, I see. Oh, I see. Interesting. Uh, with time, you can contribute to the game and probably uh, create a better random number generator. For now, this is what we are doing. Okay. This dot score equals to 0. This dot numbers, values, क्या बोलूँ? मेरे को randomly डिस्प्ले करते जाना है. Magic number. फर्स्ट लेवल पे हो. ये सब इनिशियल वैल्यूज हैं. आई कैन जस्ट do create a reset function. Reset game. It will ये मुझे हर लेवल के बाद चेंज करना है, नॉट द स्कोर. करेक्ट. Yes, Correct. points. अंकुश ड्रॉप हो गए. इंटरनेट टूट गया. अपडेट लेवल. ओके, यस, नाइस. ये चलता है ना? यस, ये चलता है. आई थिंक ये चलता है. नहीं, मिसिंग सेमी कॉलम. कुछ तो मैंने कहीं फाड़ दिया है. कुछ तो कहीं फाड़ दिया है. क्या फाड़ा है? क्या इशू है? डेटा सेट फॉर लेवल्स नहीं रखूंगा मैं. क्या? ये अपडेट लेवल पे ये इक्वल्स टू 1 नहीं करना चाह रहा क्या? आई गेस आपने ये जो फंक्शंस बनाए ये आपने क्लास के बाहर तो नहीं बना दिए? नहीं भाई. ओ अच्छा. ओ थैंक यू. थैंक यू सर. अब तक नोटिस भी नहीं किया. हाँ, लेवल यूज नहीं हो रहा है. करेक्ट. दिस इज फाइन. थैंक यू. अपडेट लेवल. Start game. Will reset game. I say, good point. I think you're saying, let me show what I say is saying, right? They're saying we should generate the data set for levels, or I can procedurally generate the data.
because I know kitna 50, 60, 70 random numbers generate karne mein, it is not going to be a noticeable like 50, 60. If somebody is remembering, I think I'll just let them win the game. If you remember 50 numbers back to back, I'm going to let you win the game. And so why I will keep it procedural is because I just want to keep it super simple uh, in terms of what we're implementing, and with time we can kind of uh, improve it. Right? Like I said, uh, if this was an interview, I would want to first do brute force, show that I can get something done, and then with time improve it, do the best version of it. Uh, that is what I do with DSA questions. But yeah. And the other thing is, we only have so much time right now, so I'll be like, okay, let's build it in one format, and then we can definitely. I'll put this out on GitHub, and you can share some improvements alongside. Cool. मैं कहाँ था? हाँ, generate numbers for level. Okay. Display numbers. All of these, should they be functions? I don't know. Most probably not. I'm just kind of thinking in terms of functions, and then I'll just go ahead and implement these. It makes my life very easy. If you think in terms of functions, what do I want to achieve, right? Oh, I want to generate numbers for this level. Oh, I want to display numbers for the current level. Oh, I want to let the user start entering the numbers they have seen, right? And during that time, at any point, I can break out. Now, this just helps me kind of move really fast, right? And if I was doing all of this in a very procedural format, which this still is, but in a lacking all these functions, then I would probably have gotten lost somewhere, and it would have taken me really long to make sense of what I was doing. This way, now I have a very clear sense of what is happening. Anybody else reading the code will also understand, okay, theek hai, this person reset the game. Then this generated all the numbers for the current level. Then we displayed numbers for the current level. Then we are going to get numbers from user. Okay. And after that, I will do a comparison, right? Verify level. Verify level will okay. This is another advanced level stuff that I want to do here. नहीं, वो रहने देते हैं because this is not rich in graphics, so I don't need a request animation frame here. Get numbers from user, they start verify level, and then I will sorry. रीसेट गेम नाम था, क्या नाम का था? रीसेट गेम ही रखा था ना? हाँ, रीसेट गेम. Notice I just changed the name of this function. I am now calling it a game loop. This is the loop that I was talking about. This game will continue doing this unless it realizes, oh, okay, wait, I don't have to do this anymore. So this dot verify level can return true or false. If I verified that you're doing correct, then I should just do a game loop again. If not, we are good to go. Okay.
So let's see. If this dot verify level, right? I'll say call itself, else break out of this. ठीक है? I can continue calling game loop. No. This is a problem. I'm writing really bad code right now, and we'll talk about this in a while. Else, do nothing. You're done with the game. This dot, okay, prompt, नहीं prompt नहीं, alert. You lost. Your score is alert में space लेता है क्या? Sorry, multiple लेता है क्या? Single string. नहीं लेता है, कोई बात नहीं. मैं यहाँ पे, अरे ये कर दूंगा ना, हो जाएगा अपना काम. This dot score. Cool. ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये है. Generate numbers for level is a function that for, अरे array में ऐसे सीड करने वाले बहुत अच्छे अच्छे तरीके थे यार. कहीं कहीं सीखा था मैंने. array के ऊपर मैप चला के वगैरह. ठीक है, अभी के लिए I will keep it simple. We will add all of these improvements eventually. For इतना भी जरूरत नहीं. अच्छा नहीं, sorry. Less than this dot level plus plus. Reset में दोनों करते हैं क्या? नहीं, अपडेट लेवल कर देते हैं. ओके. हाँ, ये प्रॉब्लम है ना. इनको इतना डिस्कनेक्टेड नहीं रख सकते. कोई बात नहीं. फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन दिस डॉट लेवल, आई प्लस प्लस. क्या करना है? दिस डॉट जनरेटेड नंबर्स और जनरेटेड नंबर्स फॉर लेवल दो अलग अलग चीज़ क्यों है? अच्छा, जनरेट नंबर्स अलग है, जनरेटेड नंबर्स पुश. ओके. अपडेट लेवल कर देगा ना ये. वेरीफाई लेवल नहीं बनाया है अभी तक.
ये कैसा अलर्ट है? अच्छा, ये मैंने लिखा था, सॉरी, कितनी चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ मैं। ओके, जनरेट नंबर्स फॉर लेवल इज डन, डिस्प्ले नंबर्स नहीं हुआ है। ओके ओके, वन आया, टू आया, वन आया, थ्री आया, ठीक है, सही चल रहा है ये तो। अब यूज़र से नंबर ले नहीं रहे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। 0 से लेकर 9 का कोई भी नंबर अभी आ रहा है, एक बार में एक ही आ रहा है। कूल। गेट नंबर्स फ्रॉम यूज़र पे आते हैं। um, okay, this dot डिस्प्ले नंबर्स का नाम क्या था? डॉट नंबर्स, जीरो। दिस डॉट प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने, वाह भाई वाह, क्या सोच के लिखा होगा। Cool. Oh, string. Yes. Yes, 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 yes. Hmm. जो prompt से मिला है उसको number में convert करना है। Cool. Cool. As you are entering, I can keep comparing, or I can just compare it after getting all the values. ठीक है, अभी के लिए I am just going to get all the values and then compare, making it super easy for me. I can do another thing. Zero नहीं, हाँ ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। इसमें क्यों कॉमा है? एंटर्ड वैल्यू इक्वल्स टू जो मिला वो, just to kind of help people understand कि कर क्या रहे हैं. This is going to be a string. That is why I am doing it this way. What if user cancel कर दिया?
तो नंबर ऑफ नल आएगा, नंबर ऑफ ये क्या आएगा, 0 आएगा. दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Yes. If entered value null ही हो सकता है सर, this और null. हाँ. नंबर डॉट में null हो गया. ठीक है. I say, like I said, right? Today we are just quickly just creating it. It's going to take a really long time if I was to keep adding more DOM elements, etc. Like I said, I'm first creating it this way, and then with time, every time, next time we sit, we will pick one small portion of it and improve it. But yes, we discussed it towards the start that we want to make it look beautiful. We want to make it behave amazingly well as well. Here's back. Hello, Ankush. Welcome back. Verify level is the only thing that is left now. Okay. This dot score. Score and level is the same thing. Whatever your score is the level at which you are. So I just don't see the need for a score. भैया this level पे खेले हो, which just resets this update level बन गया. समझ गया? Where was I doing it? Reset was being done. First level पे लाके I will start the game loop. Game loop is continuously just doing this. This is not a loop, I know. Your score is this dot level. Cool. I still don't have verify level. Let's make verify level. It needs to return true or false. That's what we have assumed in our code so far. नहीं, यहाँ ऊपर क्या लिखा था? Okay, this dot level. Good. There are multiple better ways of comparing arrays. I'm keeping it the simplest, naivest implementation possible. This dot entered numbers of I equals to this dot generated numbers of I. If these don't end up being equal, return false. Return true. चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा. चलना चाहिए. नहीं चला तो देखेंगे क्यों नहीं चला. Okay, enter your name. Sunny. Start a new game. Shows me 3. I enter 3 and I lose. The fuck? This dot verify level returned true. If this dot verify level, this dot update level.
हम्म, क्या गलत किया इधर मैंने? I think console log हाँ वो with तो file है ही, ID मतलब okay. समटाइम्स इट्स पॉसिबल टू जस्ट अंडरस्टैंड क्या हुआ था। ये दो बार क्यों है? इज दिस वन ऑफ दोज टाइम्स? सी, नो, I think it is getting false. रिटर्न ट्रू। क्या? इट इज रिटर्निंग फॉल्स। Entered numbers of I. Am I resetting those values? Yes, I am. Every time I reset the level. Cool. Have I increased the number? Yes. No. I am doing this only afterwards. Fibonacci series for the level. Yeah, I mean, we do that. First, I need to find out why this is not working, and so I am going back to Anoop's. एक मिनट, बट इफ कहाँ है भाई साहब? ये क्या किया था मैंने? कोई बता भी नहीं रहा है, मतलब ऑब्वियसली। I'm like, this code should have worked. Okay, 4 आया, 8 आया, 4 एंटर किया, 8 एंटर किया, 4 आया, 4 आया, 9 आया, 1 2 9 1 1 2 9 1 7 9 1 1 1। गलत कर रहा हूँ। अबे अच्छा हाँ, सारे वैल्यूज लेगा। योर स्कोर इज 5। फिर क्या होगा? Score ना अब मैं फिर से क्लिक कर सकता हूँ। 5 5 8 8 8 8। हाँ सही चल रहा है। 2 4 2। आई विल एंटर 4 5 6। योर स्कोर इज 3। कूल। क्लिक ऑन अपडेट नेम। वर्क्स। Okay, we have the first MVP version. MVP version, as Anup would like to call it. This is not viable at all. We need to make a lot of changes to this. But this is what we wanted to achieve. This is the game that we wanted our users to be able to play. Now we have to make sure कि इसके ऊपर amazing UI चढ़ाएं. We have to make sure the code becomes better, right? Currently, I just broke everything the way I was thinking into functions. Some of these functions might not even be required. Uh, they can just be a part of uh, the flow itself. But ठीक है, I think I would rather have too many functions than have a large unreadable code. But yeah, please drop any messages that you might have on the game development channel in our Discord. Uh, it's a pretty uh, large group there. Others can help you. I am going to publish this bad piece of code to GitHub under Team.Shiksha's repo, and happy to accept any pull requests. But we'll continue. We'll continue making this much better. We haven't implemented the leaderboard at all. Like I just show you your score and just leave it at that. I would
start storing that. Currently, again, only on front end, and go from there. This type of a game does not require a lot of canvas handling. But some games that Anup had recommended, for example, a snake game, right? That will require us to understand how to uh, draw, how to make changes only where required, request animation frame, so that we have a very smooth display, and we can make use of whatever 60 120 hertz screen that a person has. This game is not that kind of a game. This game just shows you numbers, asks you to enter those numbers. We could animate them, definitely, but yeah. Questions, queries, concerns? I have too many concerns on this, but yeah. Ankush? अंकुश है नहीं है विनायक हाँ हूँ क्या हुआ कुछ नहीं we are done with this. It's been 2 hours since we've been streaming. पहला टेस्ट स्ट्रीम सही हुआ है स्ट्रीम सही हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता. I was able to achieve the MVP. So yeah. nice please click like share subscribe Oh yes, I forgot that I have to say all of those things. But yeah, I mean, just hang out at our Discord. I'm happy to just connect with people on the Discord as well. Thank you, Vikyat, Vinayak, Shubham, Vikash, Ankush. Thank you for taking out time. I know it's a week end day for you. You hold them very preciously. But yeah. Thank you, everybody. I am going to end the stream now. I'll see you all sometime later. Discord is where we hang out. Discord is where we announce upcoming events. So definitely join our Discord. Other updates do keep coming on Twitter. are we going to hang out in Team.Shiksha Discord now Now, no, I think we've been streaming for 2 hours now. So I probably am going to go and grab some dinner. But yeah, happy to respond to text messages on the game development channel in Team.Shiksha. If you want to drop any notes there. And I think I know who you are because you're the one who checked in there as well. But again, you have an anonymous name, so I'm not going to connect the two together. But feel free to, keep sharing more suggestions. I think the kind of suggestions you shared were very apt, right? I just was trying to hack through this today and not build the complete game altogether, the way I would love to have used it. But now we have a structure and we'll keep improving this with time. So thank you. Bye, everybody. I'll see Bye. you around.